Namaskar to everybody. Thursday, we did not have many people, so we did not have the full video call. So I am now recording this session about returns. Now, return is one of the very important points of our investment. Return means कि जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करें, हमें उसमें कितना पैसा वापस मिलेगा. Returns is where the maximum frauds also take place जब लोग अनाप शनाप रिटर्न्स की बात करते हैं और उसको करते हैं. तो लेट अस सी हम रिटर्न्स क्या होते हैं और फिर इसके बाद में और भी रिटर्न्स के ऊपर एक आध दो एपिसोड और करेंगे जिससे हमें इसके बारे में ज्यादा अच्छी तरह पता चल जाए. जब मेरी वेल्थ है, व्हाट डू आई डू विद दैट? गड्ढे में गाड़ के रख सकता हूँ, जो पुराने जमाने में होता था. आई रिमेम्बर माई ग्रैंडफादर about 60 years from now पहले वो एक्चुअली गड्ढे में गाड़ के घर के अंदर रखते थे, उसके ऊपर तिजोरी भी रख देते थे, तो ठीक है. लेकिन आज की डेट में ये नहीं होता है. आज की डेट के अंदर में वी गिव द मनी ऑन रेंट और वी बाय अ एसेट जिसकी दाम आगे बढ़ जाता है. और जितना ये बढ़ता है और जितना हमें रिटर्न मिलता है या जो हमें रेंट मिलता है पैसे का, that is what the return is all about. Now, our intention is to maximize that return. Now, let us look into some psychology. जब पैसा मेरे पास होता है, I feel a lot safe. It is always available to me, but the value remains the same. That means जो 100 रुपए या लाख रुपए मेरे पास है, that remains the same thing. Because I have not done anything, the money is kept as it is. Now we are talking money here. We are not talking gold or something, which is a buying of a asset. Now, if I give the money to someone, then I get rent. Rent means an interest. वो हमें मिलता है. There is always a risk of a loss. दूसरे बंदे ने नहीं दिया, भाग गया, मर गया, कुछ भी हो गया. And money is not with me all the time. So I don't have the money. So I don't have the privilege of using that. So this is the disadvantage. Another thing we have to be very clear about is something called an inflation. Now, inflation के अंदर में our experience is that everything price of everything keeps going up. They keep on becoming expensive with time. That is inflation. कोई भी चीज हो जिसके दाम बढ़ते रहते. If you look into the price of even wheat, salaries, scooter, car, whatever, the price keeps going up with time, sometime at a faster pace, sometime at a slower pace, but it keeps going up, and that is inflation. जब inflation होता है, then our buying power is reduced with time. What it means is, आज जो मैं 10,000 रुपीस का खरीद सकता हूँ, आज से 5 साल बाद उसी आइटम को खरीदने के लिए मुझे 10,000 से ज्यादा चाहिए हो, या 10,000 से my total purchasing will be far lesser. So my buying power with the same money has gone down. How is this calculated? This is calculated in India. There is something called a wholesale price index, which is done by the economic advisor on a weekly and monthly basis. They have over 900 items in that basket, and they take the prices all over India, major mandis और सब करके. And ये data आपका various websites पे free में available है, one can download it. And the second thing is consumer price index, which is similar to above, but at a retail price level. So there is a scientific method by which the inflation is calculated. और इन 900 items में गेहूं भी है, भी है, स्कूटर भी है, and
इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट और बहुत सारी चीजें हैं, 900 आइटम और सबका एक वेटेज दिया गया है. Now this is weightage देना और ये सब is a little bit technical, and if some people want I can give that lecture on price indexes also. But please take it that there is a scientific method by which this price index is calculated. The reason why this data is very important because इस price index और इस inflation के ऊपर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी टैक्सेशन पॉलिसीज को डिसाइड करता है. जितना वो और ये सारी चीजें, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आरबीआई ने कुछ इंटरेस्ट रेट घटाए एंड व्हाट दे फाउंड वाज कि जो इन्फ्लेशन था उनका एनुअल इन्फ्लेशन वाज 0.3% or something, which was very low, which is very good. The target of inflation to RBI is 4%. And normally, if we look into a period of 10 years and above, the now average inflation in India has been around 5 to 7%, or can say around 6%. So, what is my problem? So, my problem is I want the buying power of my money to be same or more with time. अरे भैया, आज मेरे पास 1 लाख रुपए है. I can go and buy something. But as the time goes, I want that purchasing power of the money to be same or better. Now, to get something in return or give my money, and so that means I have to either buy an asset or I have to give money on rent like FD. There are a lot of things which will decide this return, and we will see this. Now, let us go into a little more mathematics. Now, mathematics के अंदर में there are two ways by which return or interest can be calculated. One is what we call is a simple interest, and the second is what we call is a compound interest. अब भाई I am a बनिया मारवाड़ी, तो I always believe in a compound interest. Compound interest में क्या होता है कि you get interest on interest, so the compounding effect takes place. Now, if you look into the simple interest chart, you invest 1 lakh rupee and at 11%, you keep on getting 11,000 per year, and the end of 6 years, you get 1,66,000 rupees. Whereas if you look into the compound interest, then on the same 11%, and the end of 6 years, you get 1,87,041 rupees. So clearly, we should try to invest in something which is doing a compound return, or all the calculations that we do, we should do looking into compound interest. ये बहुत बड़ी भयंकर चीज है जो बता रहे हैं और इसको हम आगे बात करेंगे. And my buying power is same if my returns are same or better than inflation. Simple सा फंडा है. Inflation अगर 6% compounded है तो हमें भी 6% compounded minimum चाहिए after taxes. अगर हमें उतना नहीं मिला तो हमारी परचेजिंग पावर कम होती चली जाएगी. ये पोस्ट टैक्स है. बहुत सारे लोग जैसे फिक्स डिपॉजिट कहते हैं 8% ले लो, बिल्कुल 8% ले लो, उसके बाद 8% में आपके वो इनकम टैक्स में लग के कट कुटा के पैसा मिलेगा, और कई बार ये होता है कि वो पैसा इन्फ्लेशन से भी कम होता है. सो हमें मिल तो रहा है इंटरेस्ट, बट उसकी जो एक्चुअल परचेजिंग वैल्यू है कम होती जा रही है. So inflation usually taken as 6%, and this should be taken on a longer period. Return also to be taken on 5 year plus period. ये छोटे मोटे रिटर्न आज डाला कल डबल हो गया, ये सब होता नहीं है, और जो इस तरह से बोलते हैं वो कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाने की बात करते हैं. So one has to be very 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 careful in that. All returns are taxed by government, and we have taken
प्री टैक्स रिटर्न एंड पोस्ट टैक्स रिटर्न्स दोनों ध्यान करने की जरूरत है। उन चीजों पे टैक्स बहुत कम है, किसी में ज्यादा है, उसी में कुछ डिडक्शन दिया हुआ है। We will also cover all of this taxation and returns in a subsequent session. Now, let us say 1 लाख रुपए इंटरेस्ट एट नॉर्मल रेट्स मिला, इसके ऊपर में टैक्स 30% तक जा सकता है, whereas then my effective earning is only 70,000. So I've only taken it as a peak case. Now, on the other hand, if I take a capital gain, then my gain will be taxed only at 12.5% and my effective earning is 87,500. दोनों में अंतर क्या है? Interest is guaranteed and capital gain is dependent on the market forces. It can be more, it can be less. So, जहां पे चीजें assured होती हैं, there the taxation rates are higher, और जहां पे market related होती हैं, there returns, there the taxations are. Capital gain used to be 0% for a long time in India, and then it was introduced at 10%, and now it has made at 12.5%. A very interesting fun fact: Warren Buffett, considered as the best investor in the world, 95-96 year old हो चुके हैं. कार नहीं रखता, मोबाइल नहीं रखता, महाकंजूस. तो but anyway, he says the capital gain and the income tax should be same, but then we all have different views. So again, on the gains, let us see what it is. The income tax is on predictable income, जहां income की prediction हो सकती है. For example, salary, रेंट, इंटरेस्ट, ट्यूशंस, कुछ इस तरह की चीजों में इनकम टैक्स लगता है. ट्रेडिंग इनकम, जहां पर आपने सामान खरीदा बेचा, शेयर खरीदा बेचा, वो भी एक प्रिडिक्टेबल पॉसिबिलिटी है. जहां कैपिटल गेन है, वहां पे अनप्रिडिक्टेबिलिटी काफी होती है. सो इन कैपिटल गेन टैक्स, because of unpredictability and higher risk, we pay a lower tax rate. And this can also give loss in some years. However, in income tax, the loss can be carried over to the next year. So that those are again a lot of CAs and a lot of experts on taxations are there who can do it in a better way. But we should always think in long-term views about any such things. Now, what are the interest rates in the market? Now, the real estate builders, they pay 25 to 30% interest. अगर आप उनको पैसा देते हैं तो इतना पैसा वो देते हैं. But देंगे नहीं देंगे क्या देंगे, that is a risk factor. So कभी भी investment करते हैं तो risk, duration, liquidity, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके अंदर में interest rate get or the returns get decided. क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज है जब तक आपने उनको टाइम से पे करते हैं. जैसे ही आपने पेमेंट नहीं करी तो 3 और 3.5% पर मंथ की रेट से तड़ से इंटरेस्ट ठोकना शुरू कर देते हैं, एंड दैट कम्स टू अबाउट 40%. आई ऑल्सो नो अनसिक्योर्ड लोन शार्क, वो जो जिसे हम बोलते हैं ना पठान लोग, पठानी इंटरेस्ट रेट 60% पर एनम तक जाता है, विच इज 5% पर मंथ. There are many apps which are giving such loans unsecured, and a lot of people take it for various reasons. One company I know which went bankrupt for different reasons, they used to give this loan as low as 5,000 and as high as 25,000, और इनका वो धंधा ऐसे बढ़िया भागता था कि पूछिए मत. At 5% per month or even more.
Home loans, which are more secure. Nowadays, we can get home loan up 50 years. We pay typically 8% to 11%. A car loan, typically 3 to 7 years. We pay loan between 9% to 12%. So this is just a exposure on what are the type of interest which are floating in the market. Some returns that we get is bank FD में 5 to 8%. Corporate FD means FD from a corporate or a company, 5.5% to 15%. तो जो है अग्रवाल कंगाल बैंक आपको 15% भी दे देगा, लेकिन वो ऑलरेडी कंगाल है. Post office schemes is again 5% to 9%. Stock market indexes, they give a return between 12% to 15% over a period of 30 years. We have seen it in Indian stock market very comfortably. Mutual fund also give returns from 8% to 15%. And corporate bonds or corporate FDs, there's a slight difference. Corporate FD cannot be traded in the stock market. Corporate bonds can be traded. So थोड़ा सा अंतर होता है, but by and large दोनों same चीज है. They are also 7% to 9%. Now, if we look into different returns we get, they are basically also governed by the safety of the investment, liquidity, कितनी जल्दी मैं पैसा वापस निकाल सकता हूँ, transferability, can I transfer it to some other party or can I sell it, cost of security, and many much more things. So cost of security means bank FD I can do for 1000 rupees also, but maybe a corporate bond I cannot buy for less than 1 lakh rupee. So there are many things which are there, and one at a time we are covering these. And now this is a very interesting chart. What is the effect of return over 25 years? And this is one chart which you should keep. Now, first I have taken inflation as 6% and the total value as 1 lakh rupee. So 1 lakh rupee at 6% after 5 years compounded interest will become 1.33, 10 years 1.7, 15 years 2.39, 20 years 3.2, and 25 years 4.29 lakh rupees. Now, if you look into the four cases we have put below, what is the return that you can get at, or sorry, what is the value which it will become if we take the returns? So let us say we take 7.5%. So we get 6.09 lakh rupees after 25 years. And if we look into the inflation, that is 4.29 lakhs. So it is slightly more, but nothing very great. Now the same thing if we look into case 4. Now in case 4, 14%, which is a normal index-based mutual fund over a long period of time. So there at 14%, I can get 26 lakh rupees. So 1 lakh रुपए लगा के मेरा inflation के हिसाब से becomes 4.29 lakhs my requirement. Whereas if I put it under index-based mutual fund, it can go up to 26 lakhs. So these are the different interest rates, and with those interest rate and then returns, safety and a lot of other parameters, we can look into what is the best form. Now we have to be cautious about several things. One thing is there a cost per year? For example, property tax या DP, depository participant charges, कुछ ऐसी भी चीजें खर्चे लग रहे हैं, अगर लग रहे हैं तो वो रिटर्न्स में से माइनस करने पड़ेंगे. Another thing is there a tax deducted at source, like bank FD? Bank FD में 10% deduct हो जाता है TDS. So there again we have to be
cautious and we have to do it in the calculation. And is there a regular withdrawal or deposit like SIP or SWP? So then all of these things, they changes the return. Now, these may be necessary और कुछ भी है ये हमें पता होना चाहिए और ये कैलकुलेट करके होना चाहिए. यानी कि ये अगर कोई बोले कि यार ये तो होता ही है तो बहुत बड़ी दिक्कत है. नाउ इसके अंदर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये आती है, स्पेशली इन प्रॉपर्टी, दैट व्हेन 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी उसमें अप्रोक्सीमेटली 9% खर्चा आता है टू ट्रांसफर इट इन योर नेम. तो वो 1.09 करोड़ की हो गई, ना कि 1 करोड़. Then every year we have to pay maintenance, we have to pay house tax and repair and other things also. And when we sell it, then again we have to put an expense of 2 to 3%. तो ऐसे मौकों पे जो लगता है कि इतना बड़ा गेन हो गया, और जब हम ये सारी चीज अकाउंट फॉर करते हैं तो एक्चुअल कितना गेन हुआ वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. कैलकुलेशन का तरीका है and we will go through that in the time when we are going to discuss property as an investment. एक चीज हमें जरूर ध्यान देनी चाहिए, that is something called a flat rate. ये फ्लैट रेट बेवकूफ बनाने का सबसे बड़ा तरीका है. Now ये फ्लैट रेट आपको कोई नहीं, मैं तो बिल्कुल तैयार हूं फ्लैट रेट पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन मुझे कोई नहीं मिलता. लेकिन अगर मैं लोन लेता हूं तो लोग फ्लैट रेट की बात करते हैं. फ्लैट रेट देखने बड़ा सिंपल है, अरे सर कुछ भी नहीं है. ले लोन 1 लाख रुपए का लोन 6% पे 5 years के लिए दे रहे हैं, तो आपको टोटल 30,000 रुपीज इंटरेस्ट लगा, 6% एट 5%, तो फिर आपका ईएमआई जो है उसको टोटल करके डिवाइड करके आपको दे दिया. ये जो ऊपर 6% बोल रहे हैं इसके अंदर की इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कम्स मोर देन 11%. तो 6% पे कोई नहीं देता, लोग कहते हैं 12% पे हम दे रहे हैं. एंड देन द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक्चुअली पड़ता है बिकम्स 23-24%. तो जब भी कोई फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करे कहीं पर भी, प्लीज 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 बी वेरी वेरी cautious. एंड जहां तक हो सके उसको अवॉइड करिए. अगर आपकी जरा भी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, आपको बहुत आराम से पैसा मिल जाता है, इवन फॉर कंज्यूमर गुड्स लाइक फ्रिज हो या कोई चीज हो. कार और स्कूटर के ऊपर में तो लोग भागे दौड़ते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर भागे दौड़ते हैं. तो कभी भी फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा मत लीजिए किसी से भी, चाहे कुछ भी हो जाए. That is all for today. Let us try to keep participating in the sessions, क्योंकि sessions का सबसे बड़ा advantage होता है कि there is a lot of discussion, lot of question answers which take place, and we all gain out of it. Thank you. Happy investing.